So, good morning, students. Once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay. So, as all of you know, that currently we are discussing in our subject geography, chapter number 4. The name of the chapter is agriculture. Okay. So, on our Saturday's live class, we have started discussion on one of the topic. The name of the topic is major crops. Okay, so we already discussed about the crop, that is rice. Okay, then we also discuss on wheat. Okay, so now the next crop that we are supposed to discuss is millets. Okay, now, so what is millets? Millets is basically a common name given for the three crops. Okay, millets. Millets is a name given to the group of crops. That is, it is a common name given for three crops. Which are these three crops? Ragi, ज्वार and bajra. With three crops, beta, ragi, ज्वार and bajra. Got it? So millets. So it includes, that is, millets include three crops. Okay, millets, it include three crops. Which are three crops? The three crops are ragi, then jawar and bajra. Okay, so what are millets? So millets is a name given to the group of three crops. Now what are these three crops? These three crops are ragi, jawar and bajra. Okay. These are also known as coarse grain. These are also known as coarse grain. Okay? So it includes three crops. Which three crops? Ragi, jawar and bajra. Okay. These are also known as coarse grain. इन क्रॉप्स को और क्या कहते हैं? कोर्स ग्रेन. कोर्स ग्रेन हिंदी में शब्द बोला जाता है इसके लिए क्या? मोटा अनाज. ठीक है, कोर्स मतलब दरदरा. So why these are called as a coarse grain? These are called as coarse grain because when the grains converted into flour, इनका जब आटा बनाया जाता है, क्या बनाया जाएगा? आटा. तो आटा जब पीसा जाएगा तो वो गेहूं के आटे जैसा बिल्कुल बारीक नहीं होता है, दरदरा सा. ठीक है, ने आप उसको ऐसे पकड़ करके व्हेन वी ट्विस्ट ऑन फिंगर्स, ओके, सो हमें वो गड़ता है, कण दिखाई देते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन. ओके, सो दीज आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड can be grown. These can be grown on, okay, less fertile. These can be grown on less fertile and sandy soil. Okay, so these are known as coarse grain and can be grown on less fertile और सैंडी सॉइल, कम फर्टिलिटी वाली रेतीली जमीन पर भी. ओके, द कोर्स ग्रेन कैन बी ग्रोन. It is a hardy crop that needs low rainfall
and high to moderate temperature and adequate rainfall. Okay. So हार्डी क्रॉप, हार्डी मतलब बड़ी मजबूत फसल है। हार्डी क्रॉप मतलब बड़ी मजबूत फसल है। ठीक है, तुरंत फसल की डेथ नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा तो भी कैसे न कैसे क्या करेगी, सरवाइव करेगी। सो इट इज अ हार्डी क्रॉप। ओके, रिक्वायर low rainfall, it requires low rainfall and high temperature. ठीक, तो हार्डी क्रॉप मतलब बड़ी मजबूत फसल है। मजबूत सी से सेंस ये है कि पानी की कमी से आसानी से पौधा मरता नहीं है। ठीक है, इट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर्स। ठीक है, एंड इन इंडिया द थ्री grains, that is jowar, bajra and ragi are grown. Okay, other countries where the millets are grown are Nigeria, China and Niger. Okay, so only this much is given in our syllabus about which crop, millets. Okay, I told you that the same things we required to study in standard 10, here it is given only in a brief way. Okay, whereas in standard 10 the same thing we'll have to study in a detailed manner. Okay, so the next crop is what? Maize. Okay, the next crop is what? Maize. That we call it sometimes the corn also. Okay, so it requires moderate temperature, moderate rainfall and lots of sunshine. Okay, so it requires moderate temperature, okay, it requires moderate temperature and moderate rainfall. It required what? Moderate temperature, moderate rainfall and it requires lots of sunshine. Okay, so this crop required moderate temperature and moderate rainfall. Moderate means not much high, not much low. Okay, so ना तो बहुत ज्यादा बारिश चाहिए ना ही कम बारिश चाहिए। ठीक है, बारिश की मात्रा कैसी होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। And what does it require? It requires lots of sunshine. ठीक है, then it needs, okay, it needs well drained, it needs well drained fertile soil, it needs well drained fertile soil. Now well drained means ऐसी जमीन जिसमें पानी, बारिश का पानी या फिर इरिगेशन का पानी जो है वो जमा हुआ नहीं रहेगा। यानी जितनी जरूरत है उतना मिट्टी ने पानी सोख लिया और बाकी का पानी कहाँ चला गया? नीचे जमीन में, जड़ के एरिया से नीचे चला जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज ऑल। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, इट रिक्वायर्ड गुड फर्टिलिटी, यानी जो बैरन लैंड है, अनफर्टाइल सॉइल है, इन दैट टाइप ऑफ सॉइल मेज कैन नॉट बी ग्रोन वेल। ठीक है, इसकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी नहीं होगी यदि क्या नहीं है, इफ इट इज नॉट ए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ओके, मेज
is a crop which is mainly grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. Okay. So this is what about the maize. Then the next crop is what? Cotton. Okay. Now cotton requires high temperature. It requires high temperature. Okay, so cotton crops require high temperature, then light rainfall. What it requires? So cotton requires high temperature, then light rainfall, 210 frost free days. ओके, now 210 frost free days मतलब लगभग पूरे मौसम में, ठीक है, पूरे मौसम में मतलब जब से फसल लगाई तब से लेकर के फसल के काटने तक। फ्रॉस्ट फ्री मतलब बारिश तो चाहिए परंतु फ्रॉस्ट धुंध नहीं चाहिए। धुंध यदि होगी तो इसका पौधा, फल और फाइनली जो कॉटन फाइबर है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। Okay, then second is can be grown best in black and alluvial soil. Okay, so can be grown best in black and alluvial soil. सबसे अच्छी कॉटन की पैदावार किसमें होगी? ब्लैक सॉइल में, ठीक है। ऐसे हमारा जो एरिया है स्पेशली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मोर देन 75 to 80%, more than 75 to 80% agricultural land has black soil, okay, which is considered as the best soil for the cultivation of cotton. Okay, so this soil is also called as black cotton soil. इसलिए इसको और क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। नाउ द मेजर कंट्रीज वेयर द कॉटन इज ग्रोन, ओके, सो द मेजर कंट्रीज for the cultivation of cotton is China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt. So these countries are the leading producer of cotton. Cotton is one of the important raw material for the textile industry. Okay, textile industry के लिए सबसे ज्यादा important रॉ मटेरियल कौन सा है? इट इज कॉटन। ओके, देन द नेक्स्ट क्रॉप ओके, जो नेक्स्ट क्रॉप है, द नेक्स्ट क्रॉप इज व्हाट? जूट। Okay, so jute was also known as the golden fiber. जूट को और क्या कहते हैं बेटा? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। It grows well in alluvial soil and require very high temperature, heavy rainfall and humid climate. Okay, so जो जूट है वो किसमें? alluvial soil। alluvial मतलब बहुत उपजाऊ जमीन चाहिए। अब उपजाऊ जमीन कहाँ मिलेगी? द alluvial soil is mostly found in which area? It is found in the river valley area. Okay, जो रिवर्स का वैली एरिया होता है
in that river valley area or the areas where the rivers made deltas. Okay, in those part this soil is grown. ठीक है, तो जो डेल्टाइक एरिया है वहां पर ये सॉइल मिलेगी. इन this alluvial soil the jute crop can be grown. Apart from the soil, the climatic conditions which require are, see, it requires very high temperature, very heavy rainfall, and throughout the growing season humid climate. This crop is grown in the tropical areas. Okay, India and Bangladesh are the leading producer of jute. इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो इस क्रॉप के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं. लीडिंग मतलब सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? द प्रोडक्शन इज इन इंडिया एंड बांग्लादेश. ओके, देन द नेक्स्ट क्रॉप इज कॉफी. ओके, नाउ कॉफी एंड देन आफ्टर टी. बोथ कॉफी एंड टी, these are called as beverage crop. What are they called? Beverage crops. Okay, tea and coffee. So tea और कॉफी को क्या कहा जाता है? बेवरेज क्रॉप. बेवरेज मीन्स इसको बेसिकली खाने के बजाय पीने के लिए यूज होगा. ओके, सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉफी. सो कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट. वार्म मतलब पूरे साल भर मौसम हल्का सा गर्म होना चाहिए. वेट मतलब उस गर्म मौसम के साथ. यस अंशुषा, कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया. करेक्ट. ओके, साउथ इंडिया एंड विच नीलगिरी माउंटेन्स एरिया. ओके, सो कॉफी रिक्वायर्स अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट. वार्म मतलब ठंड का सीजन नहीं होना चाहिए वहां पर, और वेट मतलब पूरे साल भर कभी कम कभी ज्यादा पर लगातार बारिश की आवश्यकता है. एट द सेम टाइम इट रिक्वायर्ड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. बिकॉज ऑफ दैट द हिल स्लोप्स, because of that the hilly slopes are more suitable for the growth of coffee crop. Okay, Brazil is the leading producer of coffee, then after Colombia, and the third place is with India. Okay, so Brazil is the topmost producer of coffee. The second position held by Colombia, and the third is with India. Next crop is tea. Now tea is a beverage crop grown on plantations. Okay, now in case of the coffee it required warm climate, but tea is little bit different. Okay, so tea requires cool climate, then well distributed high rainfall throughout the year for the growth of tender leaves. तो कॉफी के केस में वार्म क्लाइमेट चाहिए. ओके, इन केस ऑफ टी इट रिक्वायर कूल क्लाइमेट, ठंडा मौसम चाहिए, एंड हाई रेनफॉल, बारिश भारी चाहिए, एंड दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल भर लगातार क्या होनी चाहिए? बारिश होना चाहिए. यस और नो? टी इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम. ओके, टी in terms of production of tea, Assam is the largest producer of tea. Okay, in India. Again, the tea requires a well-drained loamy soil and gentle slopes. Okay, tea को well-drained loamy soil यानी इस प्रकार की मिट्टी की जरूरत है जहां पर क्या होगा? ड्रेनिंग मतलब पानी आसानी से निकल जाना चाहिए, एंड जेंटल स्लोप धीमा स्लोप होना चाहिए. लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स. ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टी के साथ क्या है कि टी रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ लेबर. लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेबर की. ठीक है, फॉर व्हाट? पिक द लीव्स. चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए लेबर की जरूरत है. ओके, सो द कंट्रीज लाइक कीनिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका आर
among the best quality tea producer in the world. Okay, बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय वर्ल्ड में प्रोड्यूस करने में विच कंट्रीज आर देयर? कीनिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा द मेजर क्रॉप्स. ओके, यही की यही चीजें नेक्स्ट ईयर, सॉरी इन स्टैंडर्ड 10 हम लोगों को ये सारी क्रॉप्स के बारे में स्टैंडर्ड 10 में फिर से पढ़ने को मिलेगा, बट इन ए डिटेल्ड मैनर. ठीक है, गॉट इट बेटा? ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट व्हाट? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ओके, so what is basically the agricultural development? Okay, again as the term says, simply the development of agricultural practices. Okay, then installation or establishment of all the infrastructure for the development of agriculture. Okay, so these things were considered as, just a minute beta. Okay, so all these things falls under what? Agricultural development. Okay, so the topic that we are going to start is agricultural development. Okay, now so what is agricultural development? Okay, so agricultural development it refers to an effort, it refers to an efforts. Okay, so what is agricultural development? It refers to an efforts made to increase. Okay, so what is agricultural development? It refers to an effort made to increase farm production, increase farm production. Okay, so what is agricultural development? It refers to an effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of in order to meet the growing demand of increasing population. Okay, so this is what all about agricultural development. Okay, so what is agricultural development? It is an effort, वो सारे प्रयास जिसके जरिए फार्म प्रोडक्शन यानी खेती में प्रोडक्शन को, उपज को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके. ठीक है, और why the farm production need to increase? फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. कंट्री की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है. इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए ज्यादा क्वांटिटी में हमें फूड ग्रेन्स की जरूरत है, पल्सेस की जरूरत है, एडिबल ऑयल की जरूरत है. वी रिक्वायर मोर एंड मोर आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर. ओके, सो दिस हैज टू बी वर्कड आउट. ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन. खेती में उपज को बढ़ाना पड़ेगा. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया. वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड
improving irrigation facilities, use of fertilizer and high yielding variety of seeds. Okay, so it can be achieved. It can be achieved. It can be achieved means we can do the agricultural development. हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, फार्म प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. कैसे? बाय इंक्रीजिंग. Okay, so it can be achieved by increasing. It can be achieved by increasing area. Okay, we can growing more crops on same land. उसी जमीन पर हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं. Okay, so more crops should be grown on the same land. Then improving irrigation. ठीक है? Now improving irrigation means if we can develop the means of irrigation, then on the same piece of land farmer can grow 2 or 3 crops in a year. Okay, so improving the irrigation, then using balanced chemical fertilizers. Okay, बैलेंस वे में क्या? केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं. एंड द यूज ऑफ HYV सीड्स. ठीक है? और क्या यूज करना है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. Now what is the meaning of high yielding variety of seeds? So what is the meaning of high yielding variety of seeds? यानी ऐसे बीजों का उपयोग करें, ऐसे बीज का उपयोग करें जिससे ज्यादा से ज्यादा फसल हमें प्राप्त हो. Okay, so that is all about what agricultural development. So agricultural development is for what? To increase the farm production. फार्म में प्रोडक्शन, खेती में उपज को, प्रोडक्शन को क्या करना है? बढ़ाना है. बेटा HYA नहीं, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ओके, सो जो फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. सो हाउ कैन वी डू? इट कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग एरिया. ठीक है? खेती का एरिया बढ़ाओ. नई नई जमीनों को, जो बंजर पड़ी हुई जमीन है जिसपे फर्टिलिटी कम होने के कारण खेती नहीं हो पा रही, उसमें इस प्रकार के मैन्योर और अन्य चीजें मिक्स करो सो दैट द फर्टिलिटी वुड इंक्रीज. देन ग्रोइंग मोर क्रॉप्स ऑन सेम लैंड. ठीक है? जमीन में ज्यादा से ज्यादा क्या उगाओ? क्रॉप्स उगाओ. अब उसके लिए क्या जरूरी है? इंप्रूविंग इरिगेशन. ओके, इरिगेशन फैसिलिटीज मस्ट बी इंप्रूव्ड. देन यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइजर एंड HYV सीड्स. ठीक है? फर्टिलाइजर्स कैसे होने चाहिए? फर्टिलाइजर कैसे होने चाहिए? केमिकल. ओके, बट बैलेंस, यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें बैलेंस वे में यूज करना पड़ेगा. एंड व्हाट हैपेंस? द यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. So when all these things are used, जब इन सभी चीजों का प्रॉपर उपयोग किया जाएगा, then only we can achieve the high production in the farmland. Okay, the ultimate aim of agricultural development is to increase the food security. अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? To increase the food security. इंक्रीजिंग द फूड सिक्योरिटी मतलब जो हमारे देश की अनाज की आवश्यकता है उसको क्या करना?
अनाज की आवश्यकता को डेवलप करना, ताकि हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अनाज अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज क्या कर सकें, ग्रो कर सकें. ओके, दैट इज और इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी. Got it, beta? So that's all for today's class. Okay, we have covered a good portion of our syllabus. So tomorrow we'll continue this one. Okay, beta? That's all for today. Once again, good morning. Goodbye. Thank you.